Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi met over 1,000 registered citizens in Bhubaneswar at his 15th public grievance hearing. People queued up early at the old Unit 2 school building, seeking solutions to delayed pensions, land disputes, allotment issues, and modifications in housing benefits. Every complaint was noted and recorded for follow-up by the CM and officials present. Among the visitors was a woman from Dhenkanal who had been evicted recently. She expressed happiness after receiving a pension of Rs 3,500 and personally urged the Chief Minister for land allotment. आशा देले बहुत खुशी हेली आपन को देखी करी भत्ता 3,500 दौजुती बहुत धन्यवाद ए घरे रहतुलु ए घरे रहतुलु ए घर हेरा भांगी भुंगा देबे मते घर देइजिति जागाडी देबे कहिजिति मते देबे पैसा पुसीटी सारे कहिजिति मते देबे खुशी हां सुनी जिति समाधान कहले करबे आपन को पई करबे बोली कहले मते बहुत खुशी. State Minister Ganesh Ram Singh Khuntia said the administration would act on legitimate needs instead of making new scheme announcements. He said many citizens were asking for land instead of the houses allotted to them, and the government would take action based on merit. He described the initiative as a people-centric system where the CM personally reviews public requests. The grievance hearings are set to continue at intervals as departments begin follow-ups based on written and recorded submissions. निश्चित भाव में जहाँ समस्या विभिन्न टाइम रे विभिन्न समस्या आसे आपण घर देले से माने घर आमे नबु नहीं जमी ए टाइप रो मुख्यमंत्री नजर को आसे जे बेबी डिस्कशन होउथला जहाँ जहाँ प्रॉब्लम अच्छे जोटा गवर्नमेंट करि परिबो से दिगरे मुख्यमंत्री ध्यान दउछन लोकंकर समस्या आधारित आमर अजथारे जो स्कीम करी योजना करी लोकन को थोपिबार नहीं लोकंकर जो बेस रे डिमांड अच्छे से दिगरे मुख्यमंत्री काम करने चाहते से खुद मुख्यमंत्री आमर मंत्री माने थिले मध्य लोक माने चाहते जो लोकंकर सरकार लोक मानकर मुख्यमंत्री तांको मोहरु सुनिया पे से चाहते आज आप देखिए प्रत्येक कथा से बुझुंट जहाँ जहाँ पब्लिक रो डिमांड अच्छे साधारण लोकंकर डिमांड से विषय अधिक अधिक ध्यान दिया.